Anyway, students, before 15th of February, listen, before 15th of February, we must have to cover up almost all the chapters of first year. ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସିବ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ସାଙ୍ଗେ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କଲା ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଛାଡିଦବ। ଏବେ ମୁଁ 10ଟାରେ କ୍ଲାସ ହେଲେ ଆମେ 8ଟାରେ ରଖିଦବା। 8ଟାରେ ଆସିକି ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା, ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ। Listen, students, the cancer fight from Hiroshima to Houston. It's by Rusuko Komaki. Listen, students, you must be knowing about cancer, a very fatal disease which has no answer. तार एबे सुधा ट्रीटमेंट तो जानी थी beyond expectation, and it is कैंसर रो प्राइमरी स्टेज रे ट्रीटमेंट होची कोबाल्ट 60 अछि। स्टिल देन लेडीज मानकर दी तीनटा बोधे कैंसर जो होची सेटा पारी गलानी। हां, किंतु 100% क्योर ने आमे कोविड की डरुचे, किंतु कोविड ठारो बेसी डेंजर होची कैंसर। लिसन स्टूडेंट, इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर Dr. Rishuko Komaki is a radiation oncologist at MD Anderson Cancer Center in Houston, USA, and an advocate of a proton therapy. पिले एटा टिके साइंटिफिक और अटेंशन, एटा साइंटिफिक चैप्टर। ये चैप्टर रे आमे कोठी के कैंसर ना सुनले भय लागुची, आमे कैंसर हॉस्पिटल भीतर को पछियाउ भय लागे। हमर आचार्य हरिहर कैंसर हॉस्पिटल रहिछि एससीबी मेडिकल कैंपस रे। आ गोटे बड़ जिनिस मन रख, जदि आमे देखिबा वर्ल्ड रो सबुठारु बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट जोटा होची एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर इन ह्यूस्टन। ह्यूस्टन होची अमेरिका रे। हम इंडिया रो बेस्ट रहिछि एबे सुधा टाटा मेमोरियल मुंबई। हां, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। अरे अंशुमान पढाला जी ओरे आसीबनी। हाउ एंड एन एडवोकेट ऑफ प्रोटॉन थेरेपी। केमिति हमर ट्रीटमेंट करा जाय पिले बेसिकली जो रेडिएशन होची जो रेज विकिरण तमे जानिथिबो, जेमति आमे गोटे लेंस आनिबा जब काच जो कुआ जाय ताकू सनलाइट की देखाओ, सनलाइट देखै जे सोलर किबा पेपर ऊपर देखा से जळिबो आरंभ करिवो, फोकस करिवो। से सेमति जो तमे जानिथिबो केमोथेरापी ठारो आरंभ करी बहुत गुडा ट्रीटमेंट करा जाय कोन की कैंसर पई, किंतु ता देरे टिके साइड इफेक्ट रही थाए। किंतु प्रोटॉन थेरापी जो गुडा करउची से गुडा एक्चुअली सो फार आज इट हैज नो साइड इफेक्ट। काना कैंसर रे जदी गोटे जगह रे जर्मिनेट हेई गला से गोटे पचरा आलू भलिया गोटे जगह तुम खोलिक पकाड़ा पुणी आ गोटे जगह हम बहुत बड़ डेंजर डिजीज, तार रिकवरी हम बहुत कष्ट। So during the final stages of World War II in 1945, two atomic bombs were dropped on the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan. तमे मन रखिथिबो पिला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रो बेसी बड़ इंपोर्टेंस होची ड्रॉपिंग ऑफ टू एटम बॉम्ब्स। गोटा ना होची आ गोटे हला फैटमैन अगस्त 6 आ गोटे हला अगस्त 9। तब बहुत इंपोर्टेंट रहउची वर्ल्ड सीनियर रे। सो the little boy was dropped on the city of Hiroshima. Hiroshima, one of the finest city of Japan, and similarly Nagasaki also, both are in Japan. So students, in the text title of this text, what do you think relates Hiroshima to Houston in the USA? Hiroshima रहिला जापान रे, Houston रहिला अमेरिका रे। अमेरिका पकैतिला एटम बम कोठी ना हिरोशिमा ऊपर। ताले सेटु के माइग्रेट हेकरी गले की ना रिसर्च करिया पे गले ना गोटे प्लेस रो आ गोटे प्लेस को शेल्टर नवा पे गले। We must have to learn it through the topic. So students, read the following unit of the text and note the contributions of Dr. Rishuko Komaki. What's the treatment of radiation related ailments? रेडिएशन रिलेटेड ऑइलमेंट्स आमे जो उपशम पाउचे, जो ट्रीटमेंट पाउचे, से ट्रीटमेंट गुडा को कोड मिलिबो ना रेडिएशन इन द सेंस तुम कहली विभिन्न प्रकार विकिरण माध्यम रे जोटी क्षत स्थान अछि, पर्टिकुलरली गोटे गोटे जगह रे जोटी मैक्सिमम लोक मानकर ट्यूमर थाए, से ट्यूमर जगह रे कोन हो पस हेकरी इन्फेक्ट कर दे। आजकल तो किछि भी कहि होबनी, आगे लोक जानि पर नथिले कैंसर कोन, एबे कोन इवन विभिन्न प्रकार वे भी कैंसर हला को माडे केमिति कोन का गटिबो के कहि परिबे नाही। हाँ भारी pathetic बापा। How the text, Dr. Rishuko Komaki was living with her family near Osaka when the atomic bomb exploded on her native Hiroshima in 1945. 1945 रे जेतेबेले ओसाका रे रहउतिले कि ना कोमाकी सेतेबेले तांका फैमिली मेंबर को सहित
but the family returned to the devastated city when she was 4. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ये devastated in the sense I mean destructive बहुत क्षतिग्रस्त ହୋଇଥିବା ସହରକୁ ପୁଣି ଫେରିଥିଲେ escaping. And Komaki grew up a witness to the long-term effects, which likely contributed heavily to the deaths of about half her relatives, including her father. ये जो dropping of a nuclear bomb हैला, तांको बापांको मिसेइकिरी तांको घरर बा परिवारर 50% लोक कोन हेतिले ना एक्सपायर्ड करथिले. तेणु इट वाज वन टाइप ऑफ आई विटनेस फॉर हर तांको पई आखि आगर एभली घटना घटितिला. जेमति पिले सुपर साइक्लोन जो माने देखिथिबे से जीवन रे आउ कोनसी प्रकार साइक्लोन को देखिले तांको डरिबेनी. आमे से गुडा सब देखिछु अंगे लिबेइछु तम मानक पई सेटा गोटे प्रकार हेइ पारे हिस्टोरिकल मूवमेंट किंतु आमे कोन करिबु ताकू प्रेजेंट को कन्वर्ट करिकरी आमे बजा तम आगे एनालिसिस कर दे परिबु आम आई विटनेस फनी हुडुडु से जो दाना से सब छोट छोट से सब एते बड़ नुहे. आ पिले लाइक मेनी जापानीज शी डेवलप्ड बोथ ए फैसिनेशन विथ एंड फियर ऑफ रेडिएशन. बहुत लोक माने जो विकिरण द्वारा करा जाए कार्यक्रम को भय करंती कारण पिले तमे देखिबो जदि जो मान को हेतिबो कैंसर ट्रीटमेंट करा जाए तर एते पावरफुल साइड इफेक्ट चुटी गुडा रहिबनी झड़ी पड़िबो आउ एते रेडिएटिंग पावर जोटा कोन करे असह्य मध्ये घटी पारे पेन आसी पारे मन रे आ बॉडी रे. When her close friend Sudako Sasaki died at age 11 of radiation-related leukemia, Komaki vowed to become a cancer doctor. Komaki कर जने बेस्ट फ्रेंड थिले ताको ना थिला कोन Sasaki. Sasaki से एटा जापानी स्टोर Sasaki जेमति सुनामी गोटे कोन की जापानी स्टोर जेमति आमे देखिबा Sasaki जेतबे एक्सपायर्ड करले ताको बंधुर से अबुला स्मृति रे से मध्ये कोन करले लेकोमिया मींस ब्लड कैंसर हाँ लकमिया हमर ब्लड कैंसर जोटा में कहू से तो एक्सपायर्ड कले कि ना तांको संग से गोटे बोर्ड माने शपथ नैथिले प्रतिज्ञा करथिले मु दिने ना दिने जते बेले हेले लिसन स्टूडेंट्स ये टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द ब्लड और बोन मैरो इन द सेंस हमर विशेष करी बोन भीतर जो सस रही थाए सेटा गोटे हे पारे किंतु आमे साधारणतः नॉर्मल सेंस रे कहू लेकोमिया होची ब्लड कैंसर बोली जोटा कि युवराज सिंह मध्ये होइतिला. सो फॉर आज एनालिसिस इज कंसर्न सो स्टूडेंट्स कोमाकी वोड टू बिकम ए कैंसर डॉक्टर तांकर प्रतिज्ञा थिला तां सांगर स्मृति उद्देश्य रे से दिन गोटे कोन हेबे ना कैंसर ट्रीटमेंट रो डॉक्टर हेबे. टुडे डॉक्टर कोमाकी हैज लर्न हाउ टू अप्लाई रेडिएशन क्रिएटिविटी एंड नो लॉन्गर फियर्स इट. वर्तमान आ रेडिएशन प्रति तांकर भय नाही. इंस्टेड as a clinical section chief and program director of thoracic radiation oncologist at the University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston, she uses it in increasingly sophisticated ways to fight cancer. हाँ पिले ट्रेडिशनल वेज मॉडर्न वेज वर्तमान देखिबो आग काल रे जो बले ट्रीटमेंट चलीतिला ता अपेक्षा बेटर ट्रीटमेंट चलीछि एवं ऑन्कोलॉजिस्ट गोटे टर्म यूज हेछि जो माने कैंसर ट्रीटमेंट रो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट रे जो माने थांती डॉक्टर तांतु कह जाय ऑन्कोलॉजिस्ट. सिमिलरली स्टूडेंट्स ये कोन कले टिके ना एक्चुअली इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न सेंस रे सोफिस्टिकेटेड वे रे ट्रीटमेंट करिया को चाहिले को मानको ना कैंसर पेशेंट मानको ट्रेडिशनल जो बोले चलीतिला ये तादरे टिके चाहिले कोन करिया पई किछ ना किछ रेक्टिफिकेशन करिया पई. She is one of the world's leading researchers and advocates of proton radiation beam therapy, an emerging treatment that many oncologists consider the safest and most effective available. पहले देखो जेते बेले जो माने कैंसर ट्रीटमेंट करनते एक्चुअली कोन के टॉपिक ता देई देछि सत किंतु हमें पढुचे तमे कैंसर रो ट्रीटमेंट रो डॉक्टर की छात्र नते कि मु मध्ये सेबल डॉक्टर न जेते इंग्लिश लिटरेचर अछि हमें से अनुसार एनालिसिस करूचे किंतु हमें एते ऑब्जर्वेशन बाबत रे कहि परिबा नाही खाली हमें इंग्लिश लिटरेचर वर्ड मीनिंग सहित जोटा हमर एप्रोप्रिएट हो वी मस्ट हैव टू एनालाइज इट. तेणु ये देखिले बहुत गुडे ऑन्कोलॉजिस्ट माने कोन करथिले टिके सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव अवेलेबल जदि हमें कहिबा 1945 रु ये हे गलानी केते 2025 1945 रु 2025 केते हे गला नियर अबाउट 80 इयर्स 80 वर्ष पाका पाकी नुए कि ये पे भी सुधा रिसर्च चली छी 100% किंतु कैंसर रो क्योर हेइनी स्मॉल पॉक्स क्योर हे गला हमर चिकन पॉक्स क्योर हे गला बड़ बड़ डिजीज गुडा मध्ये क्योर हे पारुची किंतु एबे सुधा कोन कैंसर हमर हेलानी कि लंबोदर क्योर हेइनी
एबे भी सुधा किंतु लोक मान को जे देखिबा आजिकाली आग अपेक्षा अधिका स्प्रेड करछि को गुडा को कैंसर कारण कोन आमे जो गुटका हला आमे जानू छे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ आमे किंतु लोक आगे साई करगिरी सिगरेट टिके टाणुथिबा चा टिके पिउथिबा संग मन टिके गपुथिबा धुआं टिके उडौथिबा आमे तो जो अफेक्टेड हबा हम परिवेश को अफेक्टेड करछे एटा सब जिनिस पिले किछि ना किछि कॉन्शियसनेस ऊपर डिपेंड करे आमे जानूचे कौन से गोटे डिजीज टा हबार पॉसिबिलिटी अछि प्रिकॉशन नबा ता माने नुहे जे जेतियो जंग सिगरेट टाणुछन समस्त होउची बोली कैंसर जेतियो जंग मद पिउछन सेमति कैंसर होउची बोली कहि हबनि बा लिवर डैमेज होउची बोली एटा जनरल सेंस में कंसीडर सो स्टूडेंट्स and according to Komaki her work is much better done in the context of a university program than at a private institutions पिले देखो कैंसर ट्रीटमेंट कैंसर डिजीज कैंसर मेडिसिन एटा गोटे जाइते खर्च नुहे बहुत भल भल स्पेशलिस्ट जो माने अछंती से माने जाइकरी इंडिया बाहर रिसर्च करके आसुचंती आमे भी जदी कहिबा एटा कैंसर जदी आमे पॉलिटिशियन मानक कथा कहिबा सोशल रिफॉर्मर मानक कथा कहिबा रिलीजियस रिफॉर्मर मानक कथा कहिबा बहुत भल भल स्पेशलिस्ट लोक मध्य एक्सपर्ट करछन तमे जानिथिबो स्वामी विवेकानंद गुरु थिले रामकृष्ण परमहंस से थिले कोन रामकृष्ण परमहंस को हेतला थ्रोट कैंसर सेमती बहुत अच्छी कहीं मोर उद्देश्य केमती चैप्टर से कवर करवा सेमती पॉलिटिकल फील्ड रे रिलीजियस फील्ड रे इकोनॉमिक फील्ड रे भल भल स्पेशलिस्ट को नाम मो पाखे अच्छी जो माने कि कैंसर एक्सपर्ट कर इवन क्रिकेट प्लेयर माने बड़ बड़ आमर विशेषकर प्राइम मिनिस्टर हूँ आउ जड़े भी प्रेसिडेंट से अफेक्टेड डिजीज डायग्नोसिस हो गलानी से एक्सपर्ट कले कि समस्त कहले ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर मलापुर सो स्टूडेंट्स लिसन आमे कौन से प्रोग्रामिंग एक्शन को जीवा एटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कथा नुहे गोटे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हेतिबो गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करितिबो देन एट देयर वी मस्ट अबिड टू इट आवर पेशेंट्स इंक्लूडिंग ऑल आवर प्रोटॉन पेशेंट्स आर ट्रीटेड अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स which monitor results on a large number of patients. She points out it is difficult to treat patients on a trial at private hospitals or clinics. पिले हाँ एटी गोटे अछि पंडा कैंसर हॉस्पिटल हमर विशेष करी प्रताप नगर पाखे से मोर अवश्य गोटे 94% रखी झील छुआ सी भी चलीगला 3 वर्ष पूर्व मुझे पाखे मिनिमम 8 दिन खंडे जीवाशिया कर देखा बहुत लगी भल परसेंट रखी बहुत एक्सपेक्टेशन थिला तार भी बॉडी आगु किसी प्रोब्लेम रही जोटा से फैमिली मेंबर मैंने जानी आई हैव नो आइडिया आई हैड नो आइडिया तेणु मुझे देखिली प्रति मुहूर्त में मुझे बसे पाखे खाली मन पड़े इंग्लीश ग्रामर कथा तेणु ये गोटे एभली डिजीज तुम जिते ठाकुर को प्रार्थना कर ठाकुर मैंने भी बचे डिजीज ये गोटे भयंकर परिस्थिति सृष्टि हुए तेणु पिले आमको ये टॉपिक हम कहते जिते भी जी पेशेंट हूँ आमर नॉर्मल प्राइवेट क्लिनिक हो कि प्राइवेट ट्रीटमेंट हो किंतु इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट द पेशेंट ये पेशेंट मान को ट्रीटमेंट करिया बहुत कष्ट हुए बहुत कष्ट नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये जो बोन मैरो कथा मु कहूची मोर गोटे सांग जे विशेषकर कोविड बेले पळि आसिला जाइके रहिथिला गोटे भल कंपनी पुणे रे कोविड पर पळि आसिला पर से रहिबो एई पर्टिकुलरली मु कहूची आज भी सरस्वती पूजा और रहिला जमा 4-5 दिन मु तको इनवाइट करथले मो घर को बहुत मोर गोटे भल सांग थिला एमएससी पास करथिला से झीटी बर्तमान तार तमरी एज रे हबो झीटे मुझे डाकिली घर को आसला आम घर सरस्वती पूजा रहा फोटो बहुत उठे मो सहित आम घर प्रोग्राम हुए 4 दिन प्रोग्राम हुए माँ प्रोग्राम 76 वर्षर सरस्वती पूजा गोटे ग्रांड फेस्टिवल बाहर ठार अधिक उन्नत आम करूँ आसला फोटो फोटो उठेला सब है 8 दिन खंडे पूजा सरी गोटे हुए कौन कहल अग्नि उत्सव ये माघ मासरे अग्नि जला हुए ना छके जलती कहले दिलबर मो देहटा कहीं भल लगुनि बहुत समय एमती अंटा पिटी बिंधुची आ मो अंटाटा प्रबल पेन हो तो चालू जावा देखा डॉक्टर अच्छे मुझे सब कौन कली ये महानदी विहार पिला जानी गोटे अच्छे नीलाद्री हस्पिटाल गोटे पर हारामणी मंडप पर से देखली ट्रिटमेंट करागला तार बायोप्सी बाहरी गला पॉजिटिव चलला चलला आउ कड़े गलानी किसी है बहुत घरे चलला सब किसी मुझे आध्यात्मिक लाइन में डेली प्राय मुझे कहूँ 7-8 जगह ठाकुर मान बुले बंद बांधाई मो मन भी थी मुझे ना सांगटा जहाँ रिकवर किंतु लास्ट ईयर सरस्वती पूजा दिन आम प्रोग्राम रे रही जाती पूर्व कोविड पर आसला फैमिली मेंबर आसते कि सी आ ना ये दुनिया तेणु बेले बेले मन पड़े एमती भी गोटे गोटे समय आसे आमे भाबू आमे अधिका दिन रहीबू किंतु समय भगवान जहाँ को जितकी दिन पठाई से भीतर आमको जीवन how will it amara they don't have enough manpower they don't have review boards that can check on compliance of eligibility
and maintain strict quality control of treatment. बहुत समय आमको दिए कौन ना भल भल ट्रिटमेंट कर भल इमिन केतेटा डिजीज मध्ये अछि जोटा बियॉन्ड ट्रीटमेंट जो डिजीज में तमर कौन सी प्रकार करामती नहीं. This means patients get better care here. Recently awarded the Juan A. Del Rogato Foundation Gold Medal for Best Educator and Teacher. The higher education setting also allows Dr. Komaki to share her knowledge with the future innovators. Innovation is simply something implementation newly. जोटा को हमें न्यूली किसी आइडिया दबा न्यूली किसी कॉन्सेप्ट दबा तेणु जो माने रिसर्च फील्ड रे चाहिए ऑन्कोलॉजिस्ट माने केमिति ट्रीटमेंट करा जिवो कैंसर पेशेंट को तेणु एठी पर्टिकुलरली कोमाकी कोन कले यूज कले टिके इनोवेटिव वे रे फॉर द फ्यूचर जनरेशंस जो माने कोन करिवे भलो रिसर्च करचंदी तांको पई गोटे फाइंडिंग सर्च आसीबो. I try always to educate younger people, students and trainees as well as patients to live healthy lives and achieve their goal to help others. Actually, students तो भाभी नहीं हो dropping age atom bomb family रो 50% मरी जाई चंदी यंकर कितने पेशेंट्स ये भलो पाठ पढ़ी जापान रो जाई करी अमेरिकन हॉस्टल पर्टिकुलरली जदी हमें कहबे एमडी आंदरसन हॉस्पिटल रे सेठी रिसर्च करू चंदी. एक्चुअली एटा गोटे टैलेंट नुए एटा समथिंग एग्जाम्पलरी नुए आमे हितले भांगी पड़ी थांदे आमे दुख प्रकाश करि थांदे किंतु तथापि से कहा को केयरिंग न करी निजर पथे ठीक चली चंदी एवं तांको फ्रेंड जोउतिरे जाइतिला से सेही बाबद रे मध्य कोन कले रिसर्च कले एवं जणा पड़िला जे प्रकृति रे एठी हमकु गोटे लेसन आसुची प्रकृति रे हम वी मस्ट हैव पेशेंस जदी पेशेंस हमें न रखिबा एवरीथिंग वुड एक्चुअली डिसमेंटल आउट. तमे जानिथिबो एपीजे अब्दुल कलाम कर सब बेले थिला कोन की जड़े पायलट हेबे बोली तांको लाइफ हिस्ट्री जानिथिबो पायलट हेबा पई जेतेबेले से गले इंटरव्यू दबा पई तांको भौणी रे अलंकार पत्र बिक्री हैला बिक्री से गले एपीजे अब्दुल कलाम किंतु कोन कले ना सिलेक्शन हले केते जण ना माने हमर 8-7 जनकर थिला सिलेक्शन किंतु आंकर थिला 8 नंबर सीरियल किबा एई भली गोटे बोधे डिफरेंस रही पारे और टिके डिटेल्स रहउनी. तेणु सी कौन कले जो फेल हो गले से कौन कले ना विशेष कर गंगा नदी कूले कूले एपटे सेपटे चलुंट कहले मो घर एभली प्रकार अवस्था मुझे नई भितर को डेईकि कौन करी झास देदेवी आ मु फेरबिनी से ऊपर बसी किए ना लाइफ डिवाइन सोसाइटी जे मेंबर थे किए शिवानंद सरस्वती सी कौन कले देखीदे अरे ये लोकटा किए सी तो जन साधु सत ये एमती बुलूची माने किसी बोधे कमिटमेंट कर लोक को पठेले कौन ये कौन कर बाबू ना ना किसी ना मुझे निरोला बस ना निरोला कौन बस कौन है तुम पुओ से डाकिक आनिले से शिवानंद बुझेदेले प्रकृति में तुम यहीटा प्रযোज्य चाकरी नुहे पोस्ट नुहे तमें आहरी हायर लेवल को जीव भगवान तुम रखिंट तमें आउ टिके कंसिस्टेंसी मेंटेन कर आउ टिके कष्ट कर दैट हैपेंड सेटा ही हैला से गोटे पायलट होइथांदे से दी पायलट होइथांदे इंडिया रे मिसाइल किए तैयारी करथांदा अर्थ बुझी परछन नहीं सी जदि पुणी मिसाइल तैयारी न करिथांदे इंडिया रो प्रेसिडेंट किए होइथांदा फास्ट सिटीजन हेले आउ कोन पोस्ट दरकार फास्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जदि हमें कहबा हमर देशर श्रेष्ठ होउचंदी किए ना हमर राष्ट्रपति आउ कोन तांको पे बड़ उपाधि मिल पारे कह तेणु जीवन में कही हेनी आमर किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन रहा दरकार कंसिस्टेंसी ऑफ लेबर रहा दरकार नॉलेज गेन करवा दरकार एंड दैट ऑट टू बी इनोवेटिव दैट ऑट टू बी साइंटिफिक. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आमर एटी दइछि ग्लोसरी रिलेटिंग टू लेकोमिया ए टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द ब्लड और बोन मैरो सोफिस्टिकेटेड मींस एडवांस्ड devastated means completely destroyed oncologist a doctor who treats cancer compliance la obedience innovator one who introduces new ideas of things ये वर्ड मीनिंग गुडा सब पढ़ी कंप्लीट कर दो हैला गौरव आर क्लास रे मोर मन पकई देबो आर क्लास पे गौरव वाला मॉनिटर. Then students what is proton therapy to know that is read the following unit as with test. Proton therapy like other forms of radiation aims ionizing particles onto a target tumor to damage and ultimately destroy its cancerous cells. Particularly जो ट्यूमर गुडा सब थाए से ट्यूमर गुडाक भितर आमर कौन हुए ना कैंसरस सेल्स गुडाक जिते क्रिएट करती क्रिएट हुए से कौन करा जाए ना आमर पर्टिकुलरली प्रोटॉन थेरापी रेडिएशन रे तार किसी ना किसी रुए पिले कौन कहले साइड इफेक्टिंग वेल्स ताकू कंट्रोल करिया पई सॉरी
proton therapy like other forms of radiation aims at ionizing particles. Ionizing particle माने निष्क्रिय करदेबा को पार्टिकल गुडा को आयन गुडा को आउ कोन case protons onto a large tumor up to damage and ultimately destroy its cancerous cells. आम बॉडी रे कोन होई मैक्सिमम सेल्स रही ए जो सेल गुडा को डैमेज कराई के ना कैंसर हमर जो वायरस गुडा रहिला एवं जेतेबेले आमे जदि देखिबा पर्टिकुलरली प्रोटॉन थेरापी को आमे इंप्लीमेंट करिबा ये कोन करिबो खाली कैंसरस पोर्शन टा को डैमेज करिबो एक्स्ट्रा को जगह गुडा को इम्पिडिमेंट वे रे डिस्ट्रॉय करिबो नाही but proton beams are much more localized and powerful than the x-rays used in more established radiation therapies. x-ray फोटोकॉपी माध्यम रे आमे जोटा ट्रीटमेंट करू देखो but proton beams are much more localized माने जो जगह रे हेतिबो पर्टिकुलर जगह रे आ से एरिया रे कोन करबो से अधिया किछ डैमेजेबल थिंग के क्रिएट करे दे परिबो ना हला कि then x-ray used is more established radiation therapies in the latter the dose is big enough to kill the cancerous cell to cell करिबो डैमेज करिबो किंतु तार आमे जो कहले साइड इफेक्ट गुडा मते किछ करे उदाहरण स्वरूप ले कहबी आमे कोन कर गोटे जगह निया लागि छि जो जगह रे निया लागि से जगह रे पानी पकै दियो गोटे गुळगुळिया निया रहिथिबो ये स्पार्क नेग्लेक्टेड टू बर्न द हाउस से पुनी आउरी स्प्रेड कर दियो कैंसर डिजीज मत से पॉपुलेट but some radiation also hits the healthy cells around the tumor this can cause such side effects as pneumonitis esophagitis and bone marrow toxicity or lead to the growth of a secondary cancers हमें जो टर्म गुडा रहले pneumonitis au esophagitis bone marrow ए जो टॉक्सिसिटी माने कोन पॉइजनस से पॉइजनस गुडे क्रिएट करिवो विभिन्न प्रकार साइड इफेक्ट रे आउ गोटे प्रकार मध्ये डिजीज क्रिएट करि जीवो गोटे डिजीज के हमें कोन करबा क्योर करबा किंतु ता साइड रे से कोन करबा आउ गोटे प्रकार किछि इंपोर्टेटिव डिजीज क्रिएट करिवो to reduce damage to healthy tissues by a scattered dose of a low radiation the oncologist requires sharply delineated radiation and proton beams are shaped to almost perfectly match the specific tumor and aim to strike it precisely. Collateral damage is thus minimal, making it feasible to hit the cancer with a much bigger doses. कैंसर जितेबाला ट्रीटमेंट करा जाउची जेतेबाला आमे कोन कले जो को टाइप रो लोकलाइज्ड मेडिसिन बा आमे ऑन्कोलॉजिस्ट माने इंप्लीमेंटेशन करिवे जोटा हमको अधिक किछि क्षति करबनी हम कहीं किछि साइड इफेक्ट रहिबनी अधिकांश देखिथिबो पिले गोटे रैबिज कुकुर कामुडा इंजेक्शन बहुत लोक माने जति कुकुर कामुडा इंजेक्शन कोन करिवे प्रॉपर डॉक्टर मान पाखु जे ट्रीटमेंट न करंती से इंजेक्शन किछि भूल रहइबो से लोक किछि दिन पर कुकुर भलिया खेले आड़ छड़ दौड़ी ता माने तार किछि ना किछि साइड इफेक्ट तो एटलीस्ट पिले कहबी तमे अधिकांश समय आजिकली सब किछि जिनिस रे आमे कोन करूचे एंटीबायोटिक्स बा पेन किलर तार साइड इफेक्ट अछि ना नहीं तमे देखिबो जेतेबेले तमे कोनसी प्रकार मेडिसिन खाइबो ता संगे गोटे सप्लीमेंटेशन दउचदी कोन गैस गैस दबार कारण कोन साइड इफेक्ट रहिबनी तमे जदि तम ज्वर कमीबा पई कोन कला एंटीबायोटिक गुडा खाइ देला कोन तापर पुनी पेट टाणिबो पेट गैस करिबो गोटे पर गोटे प्रॉब्लम आराम होई जिवो तने पिले आमे जदि देखिबा पर्टिकुलरली जेतेबेले आमे कोन करू कैंसर जो जगह है जो सेल गुडा को आमे डैमेज करबो के चेष्टा करू तार किछि ना किछि साइड इफेक्ट मध्ये अलगा हमर जो रहउची सेल ऊपर पड़ी थाए in addition photons x-rays releases up to 90% of their cancer fighting energy and they penetrate the skin and lose 30% of it by the time they reach the tumor पिले जेतेबेले आमे 90% रो कोनसे मेडिसिन देलु हमर डिजीज जगह रे पहुंचला बेल को होई जाउची 30% रिडक्शन होई जाउची तनु फाइट कला बेल को एटा सेल्फ सफिशिएंट हेई पारुनी अधिकांश देखियो पिले बहुत जगह रे भी देखा जाय तमे गोटे पिला माने अछंती राजी रुसिकरी पॉइजन नै जानती पॉइजन नेला बेले तांको सेटा ऑब्जर्वेशन रखा जिवो ऑब्जर्वेशन रखिला बेले हमर जो रहिछन सब विशेष करी हम देहर जो बैक्टीरिया गुडा रहिछन से गुडा देखा जे डे बाय डे रे केते बढ़ुचंती संख्या केते कमुची सेति पई तांकर टेस्ट करा जाय आ नॉर्मली गोटे रहि थाय स्केल बा जो मेजरमेंट रे मिनिमम सेतिकिटा हमर रहिबा दरकार कोन की जो बैक्टीरिया गुडा कम बॉडी रो कि हमर जो रहउचंती हेल्पिंग सब गुडा रहिले एजेंट गुडा को से केते रहि परिबे जोटा को हम कोन करबे सस्टेनेबल रहि परिबे हम बॉडी रे पिली सब अछि मु तुम कहइतले गोटे क्लास रे हमर जदी प्रकृत रे रेजिस्टिंग पावर अछि हम बॉडी रे हम जदी हेल्दी कंडीशन को आसी परिले हम बॉडी रे जदी प्रोटीनियस जिनिस रहिला से फाइट करबो का से डिजीज पई आमे खाली जो गुडा खाउचे कोन बंचिबा पई आमे कोन सुस्त सबल बा पई खाउचे
कौन आम कौट गोटे सुस्थ सबल जिन नौचे तमरी मान भर पिला सकाल किए छतुआ खाई किए कौन भात खाई कौन प्रोटीनियस जिन किसी ना कि नर्माली गोटे खाईदेव बर्तमान तुम छोट एज पिला अच्छे बोली जना पड़ना जिते छतुआ प्रोटीनियस कि तार खाଇବା गोटे टाइम अच्छी ये मु कहवा कथा आसी लिमा लिमा सकालू खाई ए जाके वेट कर कौन ना चल पिले कौटी गुपचुप टे खाईदे गुपचुप खाई कौटी कौन प्रोटीनियस जिन कौटी गुपचुप कौन प्रोटीनियस जिन मुझे जानी हैं खाली आम कौन ये भोक हबनी मेंटेन करदे आम जो बिस्किट खाऊे बिस्किट सफिसीयंट खाई दौचे बिस्किट रे कौन रहा मैदा कार्बोहाइड्रेट्स गुड़ा रहा खाइला बेलू आड़े देखला डायबिटीज परसेंट बढ़ तेणु आमको कौन करने पड़ो चंदन कुमार निजको निजे एक्सरसाइज करने पड़ो बॉडी की फिट रखा पड़ो आम टे नेचुरल डाएट खाइबा नेचुरल डाएट जोटा प्रकृतिर सृष्टि विशेषकर शाग सब्जी पनीपरिया एगुड़ाक आम जो मैगी मुझे स्पीच रे कहूली बेटी मैगी एगुड़ाक जो आम विशेषकर सोफिस्टिकेटेड जिन खाइबा द्वारा आम बॉडी से आम जो रुग्ण असुस्थ अवस्था रही से कौटे गला ग्रुप हाँ पिले देखा 30% by the time they reach the tumor, meaning their overall effectiveness is reduced by 40%. They also exist out the rear of the tumor to further damage healthy tissues behind it. By controlling the speed with which it is shot on into the body, the proton beam is calibrated to be at 30% of its maximum efficacy near the skin level while gathering full strength when it actually reaches the tumor and it barely exists the body at all. हाँ पिले जितेबाला आम रोग को ट्रीटमेंट कले सेटा प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हवा दरकार मु एग्जांपल गोटे पिले कहबी मैक्सिमम टाइम आम हाथ गोड़ कोठी कोन खंडिया हे गेला तमे देखुछ मु देखुछि सब देखुछि जदि इनसाइड रे कोन जगह कैंसर क्रिएट हैला कि देखुछि कि जोटा हमर थेरापी वे हमर ट्रीटमेंट हबो से जो ट्रीटमेंट हबो दैट ऑट टू बी प्रॉपर मु उदाहरण स्वरूप कहबी जनकर हाथ खंडिया हे गेला पडिगिरी से कोन कला से जगह रे ऑइंटमेंट यूज कला क्योर हो गेला किंतु बॉडी भितरे कोठी कोन हेले से लोक करिवो कोन डिपेंड्स ऑन टोटली ट्रीटमेंट ऊपर एवं से ट्रीटमेंट डिपेंड करछि परफेक्टली COMCER says the treatment is most recommended for those whose localized cancer has not spread to distant parts of the body. The success rate against prostate cancer, for example, is around 90 to 95%. विशेषकर prostate cancer जोटा होची सेटा बध्य तार 90 to 95% भलिया कोन रहउची ना क्योर हे पारुची. But proton therapy succeeds against many of the 130 forms of cancer. 130 प्रकार कैंसर अछंती बुझी पारुछ. A recent study led by COMCER and her husband Dr. James Cook, head of the division of radiation oncologist at UTMD Anderson Cancer Center, shows that proton therapy when used simultaneously with chemotherapy to treat lung cancer causes significantly less damage to surrounding healthy cells than other forms of radiation. हाँ पिले यदि आमे जदि देखिबा वर्ल्ड ओवर रे अमेरिका सब क्षेत्र रे नंबर 1 होबर कारण कोन तार सबुठर बड़ रिसोर्स होउचंती इंडिविजुअल मैन पावर से लोक मानकर सब बेले चिंता होउची उन्नत प्रकार रो अमेरिका डे बाय डे देखो कौन सी फील्ड रिसर्च न करची बोली कथा नाही लिटरेचर हो सोशल साइंस हो इवन इफ यू कंसीडर द केस ऑफ हमर जे कौन से डिजीजेस हो मेडिसिन हो हमर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जहां भी तमे कंसीडर करो अमेरिका रिसर्चर सब बेले वर्ल्ड ओवर रे नंबर 1 तांकर कारण कोन तांको थिंकिंग प्रोसेस भलो मु उदाहरण स्वरूप ले कहबी तमे कोन करछो वर्तमान 8 जस्ट पाठ पढ़ा सरी गेला धर जे खाइ पे की सोई पड़ पुनी देखिला वाला को क्लास अछि कि बारे नेक्स्ट बुधवार दिन मोर सरस्वती पूजा भसाणी आ मु आसी नते ओरा कथा को कहूची ता बुधवार आइल को आइला वाला को सारे कोन गोटा डिजीज ना कहउतले सारे टाइफाइड डायरिया कॉलेरा एमती डिस्कशन चलतिबो ता माने हमर आसयता आ किछि टच नै मोर कहबा उद्देश्य जे एई रिलेटेड अलगा डिजीज किछि अछि कि ता बदले हमें किछि इनोवेटिव आइडिया पाई परिबा कि आम सो मोटो ए समरीटा को टिके बुझिबा को चेष्टा करिबा एवं ए समरी टिके कांसेप्ट क्लियर होबा कष्ट सेति पई जो मानकर रेफरेंस बुक थिबो अले मते अगेन पचारले म कहि दे परिबे त आमे प्रकृति रे अपडेटेड होबा दरकार आमे जदी भलो कले मु उदाहरण स्वरूप कहबी तमे जदी भलो रिजल्ट कलो क्रेडिट कर तुमरो
ସେଟା ସବୁ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ରହିବ ଭାବିନିଅ। ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ଆମ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆମେରିକାରେ ଦେଖିନିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଗଲେ, ସିଏ ଥିଲେ କଣ ନା କୋମାକି, ନିଜେ ଥିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ରିଲେଟିଂ ଟୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ହଜବାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଭାବିଲ 2 ଜଣ ଯାକ କେତେ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦେଖ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫିଲ୍ଡରେ କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିକିରି ଗଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପର୍ସନର ପର୍ସନିଫିକେସନ କେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ହୁଏ। ଆମେ ସମାଜରେ ସେଲ୍ଫିସିଏଲ ହବନି, ଆମକୁ କିଛି ସେଲ୍ଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଉଡ୍ ବି ଅଟୋମେଟେଡ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। It is also particularly effective for children because it causes little, if any, collateral damage to their still growing tissues and organs. Likewise, the elderly are strong candidates because tissues and organs surrounding their tumors are often too weak to withstand the more commonly employed radiation treatments. Dr. Komaki also stresses that the side effects are minimal, noting one patient who played a round of golf following each of his daily outpatient treatments. ମଣିଷର କିଛି ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଟିକେ ପବିତ୍ର ହବା ଦରକାର। ଏଇ କଟକର ବିଶେଷ କରି ଜଗତପୁରର ପାଖାପାଖି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର, ସେ ଟିଚର ସଫରିଂ ଫ୍ରମ କ୍ୟାନ୍ସର, ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି କେଉଁଝର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଭେଟେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବି ସାର୍ ଆଉ କଣ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ନା ହଁ ସାର୍ ଯାଉଛୁ ପ୍ରବଳ ପିଉଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ଯୋଉଠୁ ପାଇଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଖାଲି ଧୁମ ପିଇବା। ତାମାନେ ତମେ ଗଲା ପରେ ଲୋକ କଣ ମନେ ରଖିବେ, ପରିବାର ଲୋକ କଣ କହିବେ, ପିଇ ପିଇ ଚାଲିଗଲା। ଟାଇଟଲ ରହିବ ଟପିକର ପିଇ ପିଇ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ପିଲେ ଏ ସମାଜରେ ମନେ ରଖ, ଆଜି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କାଲି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି କୋମାକିଙ୍କର ବାଣୀ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର, ସେ ବି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଫିରଦୋଷ କଣ ଇମରାନ ଖାନ। କହି କହିକିରି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବା ଲୋକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ, କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, କୋଉଠି ପାକିସ୍ତାନ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ। କହୁନା ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଏତେ କଲେଜ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମ ଶାହଜାହାନଙ୍କ କଥା କୁହ, ଆମ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ କଥା ଦିଏ କୁହ। ତାଙ୍କର ଆଗେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆଗେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ। କହୁନା ଆର୍ଟ ଆଉ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋଗଲ ଡାଇନାଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ କଣ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ପିଲେ ଦେଖ, patient think this is fabulous. She says, you know why? They rarely get sick from proton treatment itself. Are you sure you are giving me the treatment? They ask. It's amazing how much proton treatment they can tolerate compared to photon treatment. हाँ पिले, एटा गोटे ऑब्जर्वेशन वे रे दिया जाइछ। फोटोन ट्रीटमेंट, रेडिएशन ट्रीटमेंट, जेते प्रकार ट्रीटमेंट अछि, जे से टिके उन्नत धरणर लोक थिबो, रोगी थिबो, से जानिबो जे मते को ट्रीटमेंट होउछ। आमे एटा खाली कोन करबा, आउटसाइड रु पढुछे रिलेटिंग टू इट्स एप्लीकेशन। सबुटर बड़ जिंस होउची जे हमर जो ट्रेडिशनल थिला ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट भितरे कोन फरक होउची, आ कोटा प्रकृत में सडन क्योर करूची विदाउट डैमेजिंग द लोकलाइज्ड एक्चुअली सेल्स। Surgery, radiation, chemotherapy, and photon therapy were the methods used for treating cancer. Before proton therapy was adopted. To know more about proton therapy, read the following unit of the test. तो आमे मध्य सबबेले वर्ल्ड ओवर प्रार्थना करिया, प्रभु एमिति किछि साइंटिस्ट आसंतु जेमिति कि टोटली कैंसर डिजीज टा रेडिएटेड हे जाऊ, टोटली अवॉइडेड हे जाऊ, आ लोक माने किछि सफरर न होंतु। तने पिले देखिबा, when she entered medical school in Hiroshima, Komaki was taught that surgery was the only viable cancer cure. But in the 1970s, while doing his internship, residency, and fellowship in Milwaukee, she began learning how radiation could cure people, and that gave it a different meaning to me than just the atomic bomb. She said,
एटॉमिक बम तो क्रिएट कर देला एटॉमिक बम रो मध्ये रेडिएशन अछि एटॉमिक बम जेतेबेले स्प्रेडिंग आउट हैला मनीष देहटा को बर्तमान कौन कर ऊपर चपड़ा चमाटा को खोलीदब पाड़ी दे समस्ते पोड़ब प्रबल पोड़ब जमी निआ लगिगले आम देह टिके टिके फटका हो आम संगे संगे कौन करूँ आइस मारिक विभिन्न प्रकार ट्रिटमेंट सेल को जाऊ सेमती एटा कौन कर पर्टिकुलाली जिते न्यूक्लियर बम ड्रपिंग हम से कौन कर स्किन लैब को टोटाली कौन कर and it will to certain extent damage the theoretical assets relating to our body structure मो बॉडी रो जो रही ऊपर चमड़ा गुड़ा टोटाली सारी जीव आम बसीथिबा आमे आम निया पाखे बसिले शीत दिन निया पाखे बसु खरा दिन किए निया पाखे बसे कहलु मामा बसंती केते कष्ट करिक से बसंती हैं तेणु जहाँ भी हो पिले जिते आम जाना प्रकृत में ए डिजीजटा एक्चुअली टू सर्टन एक्सटेंट एटा गोटे प्रकार हमको रिमार्किंग वे बुझा जाइछथि बा कमाकी देइछथि कि एडवाइस स्टिल देन एटॉमिक बम चली गला फुट माने लोक मान को मारिला सत एटॉमिक बम लोक मान को कोन करछि विकलांग अवस्था रे क्रिएट करछि सृष्टि करउछि किंतु कैंसर लोक मान को शेयर शॉट मारुछि सो फार एज द फीलिंग इज कंसर्न she said she came to view localized radiation treatment as less harmful than chemotherapy and realized that it could not be equated at all with the scattered नहीं she came to view localized radiation treatment as less harmful than chemotherapy less harmful का केमोथेरापी अपेक्षा ये जो फोटोन थेरापी का लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट हबो सेटा लेस हार्मफुल पिले एठी मोटा कथा कहली हमर आजिकल देखिबो समस्त देह रे जहार ट्रीटमेंट करा जिवो जहार टेस्ट करा जिवो समस्त होची कोन कहला फैटी लिवर आम लिवर ऊपर फैट मारी जाउछ जोटा कोन करूची हमर हजम शक्ति की कमाई देउची देखिबा आजिकल आ लोक मानकर हजम होउनी लोक मैंने जी तुम छोट पिला तुम किसी प्रोब्लेम होनी जो मैंने 40 प्लस से देखा पिले डाइजेशन सिस्टम आउ काम करनी हजम शक्ति ना आ गोटे गोटे लोक कौन कर दिन मान थे कि दिथर जीवा कथा कौन कि आमर विशेष कर लाट्रिन की किंतु लोक मैंने 4 थर 5 थर 6 थर 7 थर लास्ट को बाटर शौचालय देखिले सुंदर शौचालय से पड़े तार माने कारण कौन आमर हजम शक्ति ठीक ना तुम अवश्य छोट पिला अच्छे बोली तुम चली प्रकृत में 40 प्लस है मैंने रश्मिता हसुची ना ना ये रियली फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग इट इज द नियर ट्रबलसम ऑफले हमर स्टूडेंट्स पेज नंबर कितने दिला मैं फोटोन एक्सरे नहीं सी एक्चुअली सिचुएशन को बेस करी एटा ट्रीटमेंट रही सी अमेरिका एक्सरे टा हम लोकलाइज रे हम देखा ये सेटू आसिला पर रिसर्च करी कंसीडर करके जापान रे तांको व्यू पॉइंट नेक्स्ट स्टूडेंट्स When she entered medical school in Hiroshima medical school को entered कले कोमाकी was taught that surgery was the only viable cancer cure. आ बहुत समय कौन करा जाए सर्जरी करा जाए मे बी ओपन सर्जरी जो भी हो ताको रिमूवल करा जाए पारे बट इन द 1970s while doing her extensive research कले internship residency and fellowship in Milwaukee she began learning how radiation could cure people. रेडिएशन द्वारा लोक मैंने केमिति क्योर हो पारे कारण कौन जदि आम सर्जरी करदेले सेटा गोटे गोटे कौन हम स्पॉटलाइट सब्सटेंसेस रहिबो जेकोसी जगह जोटा आम रिकपाई करबा मध्ये कष्टदायक जोटा फिलअप करबा कष्ट हबो जोडी मैक्सिमम टाइम करा जाय थाए सो एंड गिव इट ए डिफरेंट मीनिंग टू मी देन जस्ट द एटॉमिक बॉम्ब she says she came to view localized radiation treatment was less harmful than chemotherapy and realized that it could not be equated at all with the scattered uncontrolled radiation to whole body that comes to the exposure of an atom bomb. हाँ पिले हमर atom bomb रो मध्य radiation create करा जाए ताकू जदि हमें proper way implementation करि परिबा तले एटा मध्य ह्यूमन सोसाइटी पे किछि बेनिफिशियल दे दे परिबो
एक्सटेंशन पर ताकरा खाली कैंसर के रूप से सर्जरी इंटरनल कैंसर का नड़ा पहले से तो फर्स्ट ईयर जड़ा भी सर्जरी और तो लास्ट ईयर के द्वारा क्लिनिक प्रोवाइड सिम्पटम जेते हम कहले बायोप्सी तार जो ट्रीटमेंट करा टेस्टिंग टा तमे देखिबो जो मानकर गोटे कोनोसी प्रकार ऑपरेशन हेची आजिकल दुनिया तो सब लोक मानकर जे कोनोसी प्रकार ऑपरेशन हेई परिबो से ऑपरेशन हैला परे परे जदि किछि पॉस हेई जायछि पूजो पूजो हेई जायछि संग संग से पोर्शन टा से कोन करियो पठे देबे बॉम्बे सेठी की टेस्ट करिया पई से रिपोर्ट आसिला बेलको मिनिमम 15-20 दिन लागि जिवो 15-20 दिन आसिला परे वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव से इंटरनल एक्सटर्नल डजंट मैटर आ मैक्सिमम देखिबा आजिकल फेस रे जो माने माउथ रे विशेष कर जो खाऊचे आमे कौन कि खैनी गुटका एगुड़ा सब खाऊचे निशा द्रव्य गुड़ाक एगुड़ा खाइबा द्वारा कौन होउची ना बेले बेले सेगुड़ा मध्ये कैंसर कराउची ताकू केमे जणे जानिबो ताकू एकमात्र होउची बायोप्सी टेस्ट करिया पर मना हां सेइबा सेटा टोटली सेल को धरिबो टोटली सेल गुडा को धरिबो आ एबे भी हम जदी कहिबा मैक्सिमम जगार मैक्सिमम गाँव रे घर पाखक घर जदि देखिबो ए रोग भी आसीगला तार कारण होउची कोन आम बॉडी रो जो मु कहि सब बेले तुमको हमर आ प्रोटीनियस नाही हमर जो डिपेंडेंट करिया पई हमर रेजिस्ट करिया पई आ पावरफुल जिंस किछि नाही जोटा कि हम मानको बहुत किछि क्षति करूची लास्ट स्टेज रे भी जणा पडुची लास्ट स्टेज रे तमे किछि क्यूर करि परिबनी किछि भी क्यूर करि परिबनी नहीं प्राइमरी स्टेज रे मु पता तुमको कहली तमे जे पर्यंत गोटे डिजीज न होईची कोठी की जीवनी मेडिकल को जीवनी मेडिकल को गले मु पा कहली मोर से सांग कथा तार कोन होतला किछि नाही छि गोटे भलो साइंस स्टूडेंट गला तार कोन अंटा पेन होउची अंटा पेन होउची कोन होउची ना तार जो बोन मैरो अछि जॉइंट्स ठीक अंटा ऊपर गिरी जो रही कौन ना कि रही जाता पानी अंश टिके नर्व रे से पानी टाइम जो काढ़ले कि भल लगे ऑपरेशन करी पानी बाहरी गला से पानी की टिके टेले देले कौन कि बायोप्सी करने बायोप्सी रिपोर्ट आसला जे प्रकृत में सफरिंग फ्रॉम कैंसर गुड आफ्टरनून हां देखो एडी पुणे हम पिला देखिबा इन 1985 she and Cox went to Columbia Presbyterian Medical Center in New York to work with Dr. Eric Hall, then a leading international authority on the effects of the atomic bomb on humans. In 1988, she began putting her years of research to work at UT MD Anderson Hospital. So Anderson Hospital ले से मैंने कौन कले ट्रीटमेंट को गले अब नेक्स्ट गोटे कथा होची पिले मन रख जेते बेले तमे कौन करिवो असिमिलेट करिवो नॉलेज different type of people मानक सहित मिसिबो you can find that it would be very relaxable for you तम पे बहुत रिलैक्सेबल हे परिबो कारण रिसर्च वर्क रे से बहुत सपोर्ट दब सेति पे अमेरिका रे मैक्सिमम रिसर्च लैबोरेटरी रे 24 आवर्स रिसर्च चली विभिन्न प्रकार डिजीज अगेंस्ट फाइट चली से सेति पे भी अमेरिका यदि हमें कहबा प्रकृत रे इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस अत्युक्ति होबनी आ वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली लेजेंडरी कंट्री to fight against different type of diseases. Even jete research chalichi American number 1. The proteins were discovered by Ernest Rutherford in 1919. Proton therapy did not commence until 1954 at Berkeley Nuclear Physics Labs. It is for multiple choice question. Try to remember it. Amar proton ta ko discover kartile kiye Rutherford. Kebe 1919 रे. किंतु आमे जदि proton therapy कथा consider करिबा it was particularly developed in 1954 at Berkeley Nuclear Physics Labs. The Howard Clayton Laboratory partnered with the Massachusetts General Hospital to begin treating cancer patients in 1961. 1961, ebe jama just treatment chalichi. But the necessary technology is so expensive that treatment remained confined to physics research labs until 1990. 1990 मसीहा पर्यंत बोधे फिजिक्स लैबोरेटरी प्रोटॉन टा एक्चुअली कोन कि इट इज गाइडेड बाय फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल चेंज को तेणु 1990 पर्यंत देखिबा फिजिक्स लैब रे मते रिसर्च सेंटर रे आ बाबत रे बहुत किछि चली छि कोन कि ऑब्जर्वेशन दैट्स व्हेन द प्रोटॉन ट्रीटमेंट सेंटर ओपनड एट लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर इन साउदर्न कैरोलिना टू ऑफर द फर्स्ट हॉस्पिटल बेस्ड प्रोग्राम एगुडा गोटे गोटे तमर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पई को जगह रे प्रकृत रे हमें जति देखिबा
जे प्रोटन ट्रीटमेंट सेंटर को जगह हेतला ना एट लोमा लिंदा यूनिवर्सिटी कोडी ना साउदर्न कैलिफोर्निया रे integrated by the proton therapy research then available Komaki and Cox visited Loma Linda earlier on ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ରହିଲା expectation how to fight against the disease cooperatively coordinatively and began to push for a similar unit at UTMD Anderson when they returned to Houston ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି କଣ କଲେ ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ their efforts paid off in 2006 2006 ମସିହାରେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା when the $125 million proton therapy center opened its doors offering a complete range of proton treatments into kon kala advance kala it is the only such facility in the southwest particularly jodi ame kahiba southwest bhitere kiye gale in addition to Houston and Loma Linda the nation now has centers in Florida then Indiana and Massachusetts with several more big plans today Komaki and her colleagues treat thoracic malignancies therapy that requires a treatment team of 7 doctors, several physicians and a decimetrists and a couple dozen techniques in 10 to 15 patients daily. से कौन करछन expert हेले एवं प्रकृति जदि हम देखिबा एडवांस टेक्नोलॉजी रे वर्तमान 10 ରୁ 15 भरी पेशेंट को डेली कौन करछन ट्रीटमेंट चली छि with 4 of them taking proton therapy like other radiation treatments proton therapy runs about 7 weeks 7 week पर्यंत चली थाए in all proton therapy center with Dr. Andrew Lee as medical director treats 75 to 80 patients only वर्तमान 75 ରୁ 80 भली लोक मान को डेली कौन कले ना ट्रीटमेंट करई देले to Komaki this is just the beginning our physicists have already made a machine here that creates a scanning beam total जेमते हमरा बॉडी स्कैन करे जाय सेमते कैंसर पेशेंट मानकर मध्ये स्कैन करा जाउची को जगह रे को टाइप रो फॉल्ट लागुची एवं से अनुଯାयी तांको कोन करा छै ना ट्रीटमेंट करा जाय she says we are the only place in the world which is scanning beam which means we can remove neutron contamination न्यूट्रन कंटामिनेशन माने कोन जते बेले प्रकृति रे प्रोटॉन गुडा को एंट्री करा जाय ट्रीटमेंट रे सेठी साइड बाय साइड कोन होउची ना न्यूट्रिएंट हमर विशेष करी न्यूट्रन गुडा को क्रिएट मध्य हेई परची बॉडी रे देखो she also believes that proton therapy is extremely important to the future of cancer care पे एटा गोटे बहुत किछि प्रॉफिटेबल हेई परिबो these patients are already sick from cancer she says why make them get sicker from treatment प्रकृति रे बहुत असुस्थ ही पड़छन जेते बेले तांको ट्रीटमेंट दिया जाउछि now we can make them more comfortable killing cancer cells but not killing normal cells आमे कैंसर सेल गुडा को डैमेज करिबा नॉर्मल सेल गुडा को डैमेज करिबा नि now they can live a normal life while getting treatments whatever happens next in this field Dr. Rishiko Komaki and her colleagues at UTMD Anderson are likely to be at the forefront माने आगे धड़ी रे ट्रीटमेंट रे से माने आगे रे अछंती आगे अछने मु तुम पिले कहली एटा जो लेखा है एक्चुअली रिलेटेड टू प्रैक्टिकल कथाटी कहिसंती आमे थियोरेटिकली पाठ पढुचे हमर प्रैक्टिकल नॉलेज जगह नाही तेनु करी ये डिजीज सुनिला पर भी मन ठीक गोटा अलगा प्रकार लागुची गोटे शिथिलता आछी तेनु आमे देखिबा सब बेल पय आर जो वर्ड मीनिंग गोटा रहिला वायबल इन द सेंस इट इज पॉसिबल कमेंट्स इन द सेंस बिगिन अच्छा इंट्रिग्यूड मींस इंटरेस्टेड टू नो मोर अच्छा डोसिमेट्रिस्ट मींस एक्सपर्ट इन डोज ऑफ रेडिएशन जो माने रेडिएशन डोज रे दियंती अच्छा नेक्स्ट होची सेकेंडरी मैलिग्नेंसी ए कैंसर दैट अराइजेस इन द बैकग्राउंड ऑफ अनदर मैलिग्नेंसी हम देखबा कोन गोटे कैंसर को ट्रीटमेंट कला किछ जन हेलो मैलिग्नेंसी माने पाउची गोटे डिजीज क्रिएट हैला ताको हम ट्रीटमेंट कला पर तार साइड रे आ गोटे पुनी कोन करो सुच तमे देखा बिले गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल कहूची पथ गोटे जगह रहला तमे तो कोन करे चिपि जाके पोस्ट बाहर करके बैंडेज कर दियो किछि दिन पर आ गोटे पथ जे जेम तार कोन करे चेरो माडला बढ़िया जेम ते हमर कहला गौरव से गोटे पर गोटे कोन करे चाली तमे जानिबो पिले म कहबी से सांगर जो हेइतिला तार बॉडी रो इबिनी ता नाकुरु बाहरला पस लास्ट दिन ता गालुरु बहुथिबो ता बॉडी टा को एमिथिला टोटली मांसटा को पचै देला केते प्रकृति रे डेंजरस डिजीज है फाटल डिजीज तेणु आम प्रभु भगवान को स्मरण करने दरकार एभली डिजीज न हो जहाँ भी से शीघ्र आरोग्य हो जातु आप किसी मेडिसिन गुड़ाक कौन हो केमती डिस्कवर देखो आ तुम
चैप्टर भितर आउ को चैप्टर रहिला बोधे इनविटेशन 2 रो अछि इनविटेशन 2 रो ओपन विंडो ना कोन देखिलु ओपन विंडो आ वन आर होचे होता है हां सर पोएट्री में तो अच्छी होगा the only one at 40 the child marriage it's a each चारटा चैप्टर पोएट्री गोटे फर्स्ट हां ये बात तो सर की पड़ जाता है